Hello to everyone. Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 5, Admission of a Partner. In this video we discuss about example number 11. Now example number 11. Prerna and Piyush are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of their capital. Balance sheets of their firm was as under prepare necessary accounts and new balance sheets of the firm. इट मीन्स यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है वही कैपिटल रेशियो है. ओके, यानी कि उनकी कैपिटल की रेशियो जो है वही उनकी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग की रेशियो है. और हमें यहाँ पे प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स ऑफ द फर्म यानी कि न्यू बैलेंस शीट्स बनानी है और जो जरूरी अकाउंट्स है वो भी हमें प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स. और हमें पार्टनर्स के कैपिटल और करंट कौन सा अकाउंट बनाना है वो हम बैलेंस शीट देख के कह सकते हैं कि पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट बनाना है. यदि बैलेंस शीट्स में करंट अकाउंट की बैलेंस भी दी हुई है तो हमें दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे. यदि ओनली कैपिटल की बैलेंस दी है तो ओनली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा. तो इस एग्जांपल में हमें रेवल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट्स ये बनाने हैं. लेट्स सी द बैलेंस शीट्स. लायबिलिटी साइड्स फर्स्ट. कैपिटल अकाउंट प्रेरणा 50,000, पीयूष 1,50,000. देन रिजर्व फंड, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. देन असेट साइड्स बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर्स, कैश बैंक और एक्योर्ड इनकम. ओके, यहाँ पे मैंने जो येलो टिक की है वो क्या है, तो वो एडजस्टमेंट है जो हमें एग्जाम्पल में दिए है वो, और जो एग्जाम्पल में नहीं दिए पर वो सीक्रेट एडजस्टमेंट है, जैसे कि रिजर्व फंड है तो वो सीक्रेट एडजस्टमेंट है तो मैंने वो टिक कर लिए है. ओके, नाउ फर्स्ट वी फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. हियर प्रॉफिट्स और शेयरिंग रेशियो of Prerna and Piyush is a capital ratio. Okay, so first we find out capital ratio, then after these which are capital ratio, same ratio is our old ratio. Okay, so first we find out capital ratio. It means capital ratio is equal to our old ratio. Okay, so therefore the capital ratio is find out like this. Our Prerna's capital how many? Here Prerna's capital is 50,000 rupees and Piyush's capital is 1,50,000 rupees. So capital ratio is equal to 50,000 raised to 1,50,000. Okay, then it's a simplify is equal to 5 raised to 15 and again it's a simplify क्योंकि उसे भी हमें स्मॉल बनाना है तो 1 raised to 3 यानी कि 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15. ओके, यानी कि कैपिटल रेशियो इज ओवर 1 raised to 3 and capital ratio same our old ratio. Okay, so our old ratio is here 1 raised to 3. Here our sacrifice ratio also 1 raised to 3 because of here not given new ratio or sacrifice ratio. Okay, so our capital ratio is equal to our old ratio is equal to our sacrifice ratio 1 raised to 3. Now let's see balance sheets. There is given in liability at liability sides capital account Prerna 50,000 rupees, Piyush 1,50,000 rupees. Then reserve fund, ये तीनों फिगर हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में. Now in partners capital accounts at credit sides there is write down first capital of their यानी कि प्रेरणा और पीयूष की हम पहले कैपिटल राइट करेंगे. सो देयर इज राइट डाउन इन फर्स्ट कॉलम बाय बैलेंस बी ऑब्लिक एफ यानी कि बी एफ मीन्स ब्रॉड फॉरवर्ड. हमने ये बैलेंस आगे लाए हैं. प्रेरणा की कॉलम में राइट करेंगे 50,000 रुपीज और पीयूष की कॉलम में राइट करेंगे 1,50,000 रुपीज. ओके, देन रिजर्व फंड ऑल्सो हम यहीं पे राइट करेंगे और ये रिजर्व फंड हमने डिवाइड किया है उनके
ओल्ड रेशियो में, ओके, यानी कि 1:3 में। सो हियर बाय रिजर्व फंड अकाउंट प्रेरणा की कॉलम में 7,500 और पीयूष की कॉलम में 22,500। जो हमारा रिजर्व था 30,000 वो हमने 1:3 में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों पार्टनर्स में, प्रेरणा और पीयूष में। इसकी काउंटिंग मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर में दिखाई है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे कि टोटल रिजर्व फंड कितना है 30,000 रुपीज। सो यहाँ पे पहले प्रेरणा का हिस्सा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सो 7,500 रुपीज इट इज अ शेयर ऑफ प्रेरणा। देन पीयूष का है शेयर कितना होगा, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, सो इट्स शेयर ऑफ 22,500 rupees. Then next entry is here creditors 40,000 and outstanding expense 1,500. It is transferred to again in our new balance sheets. So in our new balance sheets there is write down at the liability side creditor 40,000 rupees. In write down its 40,000 rupees amount in inner column because of there is a one adjustment related to creditors. Then after write down one line left any skip, then you write down there outstanding expense 1,500. These amounts you write down in outer column. Then next entry in our old balance sheets there is a liability side is finished. Then we will see asset sides. Asset sides given their building, furniture, machinery, stock, debtors and acquired income. These are we recorded in our new balance sheet. So let's see. Now let's see in new balance sheets where we write this. In new balance sheets we write down there at the asset side. There is write down building but its amounts in inner column 90,000 rupees. Same furniture 70,000, machinery 1,07,500, stock 70,500, debtors 30,000 rupees. ये सभी की हम अमाउंट इनर कॉलम में राइट करेंगे। ओके, बट एक्वायर्ड इनकम है उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो इट्स अमाउंट वी राइट डाउन इन outer column 750 rupees. Then in our old balance sheets there is write down cash bank 8,250 rupees. It is cash balance. Okay, so we recorded this and we transfer this balance at the cash bank account. And in cash bank accounts debit sides write down there in particular column to balance BF to 8,250 rupees. Now let's see adjustment. So there is a write down they admitted Poini as a new partners for 1/5 shares for profit on 31st March 2016 on the following terms. First terms is Poini brought rupees 62,500 as capital and rupees 24,000 as her share of goodwill in cash. 60% amount of goodwill is withdrawn by the old partners. It means यहाँ पे जो पॉइनी है वो 62,500 rupees capital लाई है. So this capital we recorded at partners capital account. बट हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने दो ही कॉलम बनाए हैं प्रेरणा और पीयूष का. सो दिस कैपिटल वी ट्रांसफर डायरेक्टली इन आवर न्यू बैलेंस शीट्स. ओके, देन हियर 24,000 rupees given and it is a share of goodwill of Poini. So it is our premium for goodwill and it is distributed in our partners in their sacrifice ratio. But here not given sacrifice old new ratio. Okay, so our old ratio is equal to our new ratio and it our sacrifice ratio 2. ओके, यानी कि वही हमारा ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाई रेशियो का तो वो 1:3 है. अगर
उसे न्यू रेशियो कहे तो भी वही है। ओके, इट मीन्स कि हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो हाउ मेनी अवर प्रीमियम्स फॉर गुडविल? 24,000 and it is distributed in Prerna and Piyush, between Prerna and Piyush. So here our sacrifice ratio is 1:3. So our first Prerna's share is 24,000 multiplied by 1/4. So 6,000. This is the Prerna's share for premium for goodwill. Okay. Then after Piyush share 24,000 multiplied by 3/4. So its his share is rupees 18,000. Okay. Then it's 60% they are withdraw. ओके, सो प्रेरणा ने कितने विड्रॉ किया? तो प्रेरणा ने 6,000 मल्टीप्लाई 60%, सो 3,600 विड्रॉ बाय द प्रेरणा ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, देन पीयूष ने कितना विड्रॉ किया? तो पीयूष ने 18,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, तो 18 6 108 यानी कि 10,800 रुपीज उसने विड्रॉ कर लिया है। तो हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कहाँ पे करेंगे? इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, और जो विड्रॉ किया है वो भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड्स पे राइट करेंगे। सो नाउ इट्स एडजस्टमेंट्स एंट्री वी सी हियर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट वी given first entry in our cash bank accounts. There is a debit sides. We write down to Poini's capital account because of Poini brought her share of capital 62,500 rupees and she brought her cash as a capital 62,400 rupees. So cash comes in our business. So we recorded at the debit sides of cash bank account. So there is write down to Poini's capital account 62,500 rupees. Then second entry given there to premium for goodwill account, यानी कि premium for goodwill account जो goodwill है उसके हिस्से की वो भी वो कैश में लाई है. So cash comes in our business. That time we debited. Okay. So to premium for goodwill account 24,000 rupees and ये दोनों एंट्री मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में राइट की है. Then here प्रेरणा's कैपिटल अकाउंट एंड पीयूष कैपिटल अकाउंट हमने जो क्रेडिट साइड्स पे राइट किया है वो क्या है? तो वो है प्रेरणा और पीयूष ने जो गुडविल विड्रॉ की थी वो है उनके हिस्से की. ओके, जो प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ की थी 3,600 rupees and 10,800 rupees. And here by the withdraw our cash balance is decreased. So we write down यानी कि our cash balance goes out from our business. So these transactions we recorded at the credit sides of the cash bank account. So we write down there in blue color by Prerna's capital account 3,600 rupees and by Piyush's capital account 10,800 rupees. Then second entry given in our partner's capital account, there is write down first premium for goodwill account. Here मैंने जो क्रेडिट साइड्स पे प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट राइट किया है ग्रीन कलर में, वो प्रेरणा की लाई हुई पोइनी की लाई हुई गुडविल है. वो हमने प्रेरणा और पीयूष के बीच में उनके रेशियो के हिसाब से बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ओके, तो प्रेरणा के हिस्से में 6,000 और पीयूष के हिस्से में 18,000 आते हैं. देन आफ्टर एट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्रेडिट यानी कि डेबिट साइड्स पे मैंने जो ब्लू कलर में इंडिकेट किया है वो कैश है जो विड्रॉ कर लेते हैं प्रेरणा और पीयूष जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल है. ओके, सो राइट डाउन देयर टू कैश अकाउंट. प्रेरणा की कॉलम में 3,600 रुपीज और पीयूष की कॉलम में 10,800 रुपीज जो हमने 60% गुडविल विड्रॉ कर ली वही एंट्री है. ओके, and Prerna's capital entry we recorded in our new balance sheet. Now in our new balance sheet there is write down capital account first Prerna then Piyush then Poini. तो पोइनी जितनी अपनी कैपिटल लाई है वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर ली है
62,500 रुपीज, बट इसकी अमाउंट हमने इनर कॉलम में राइट की बिकॉज ऑफ हियर रिमेनिंग टू पर्सन्स कैपिटल अकाउंट, लाइक फर्स्ट वन इज प्रेरणा एंड सेकंड वन इज पीयूष capital accounts is missing because of we find out end of the example, then we will write down here. Okay, then second terms of their यानी कि second adjustments is market value of stock and machinery is rupees 20,000 and 1,20,000 respectively, यानी कि दोनों की यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुए बिकॉज ऑफ इन आवर ओल्ड वैल्यू इन इट इज स्टॉक की वैल्यू है 70,500 रुपीज और मशीनरीज की वैल्यू है 1,07,500 रुपीज, तो दोनों की यहाँ पे इंक्रीज हुई है वैल्यू। तो स्टॉक की कितनी हुई है 2,500 रुपीज और मशीनरी की भी 12,500 रुपीज वैल्यूज इंक्रीज हुए हैं। ओके, सो this we know that when any assets increase due to revaluation, that time we recorded this increased value in our revaluations accounts, the credit sides. Okay, so यहाँ पे मैंने ग्रीन और ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में स्टॉक और ब्लू कलर में मशीनरीज की इंक्रीज हुई वैल्यू राइट की है। सो देयर इज राइट डाउन बाय स्टॉक अकाउंट 2,500 रुपीज और by machinery account 12,500 rupees. Then second entry given in our new balance sheet, there is write down in green color stock 70,500 plus increase 2,500. So our total stock is 20,000 as per our terms number 2. Okay, then machineries also write down there. Machinery 1,07,500 plus increase 12,500, so its total 1,20,000. Write down in outer column. Then adjustment number 3, यानी कि terms number 3, provision for bad debts at 10% and 2% discount reserve on debtors is to be made. It means we have to here bad debts reserve and discount reserve. Bad debts reserve is 10% and discount reserve is 2%. Okay, so our debtors is 30,000, then minus bad debts reserve 10%, it means के 30,000 के 10% is 3,000. So our remaining debtors is 27,000, again minus discount reserve 2%, यानी कि ये 2% 27,000 पे निकलेंगे। So 27,000 multiplied by 2%, so it's our answer 540 and it is cut from 27,000. So our remaining यानी कि our net debtors is 26,460 rupees है. Okay, and this entry we recorded in revaluation account and in new balance sheet. Let's see its entry first in balance sheets, यानी कि हमारा जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें हम पहले एंट्री देंगे। सो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है कि डेप्टर 30,000 माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व 3,000। यहाँ पे मेरे पास पूर्ति स्पेस नहीं है, ओके, इनफ स्पेस नहीं है, तो मैंने दोनों माइनस एक साथ लिख लिए हैं। पर आप ऐसा कर सकते हैं कि डेप्टर्स 30,000 माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व 3,000, देन डाउन की कॉलम में आप डाउन की जो लाइन है उसमें राइट करेंगे 27,000, अगेन माइनस discount reserve 540, then its difference write down in outer column 26,460 rupees. And next entry given in revaluations accounts debit side, there is write down 2 bad debts reserve 3,000 and 2 discount reserve account 540. ओके, ये दोनों हमने यहाँ पे क्यों राइट किए, बिकॉज ऑफ ये दोनों हमारी लायबिलिटीज है और दोनों ये हमारे रिजर्व्स है। सो ये इंक्रीज हुए तो हमें लॉस होगा इनडायरेक्टली, सो बी रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन
यानी कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स इज नंबर 4, यानी कि टर्म नंबर 4, creditors are to be paid rupees 30,000. It means we less pay 10,000 rupees. How? Because of our creditors is 40,000 in our old balance sheet, but now we have to pay only 30,000 rupees. It means 10,000 we can't pay this. Okay, so here liabilities is decreased, so it is our profit, and we know that when any liabilities is decreased, that time we recorded at the credit sides of revaluation account. So here also I recorded at the credit side, that is write down by creditors account 10,000 rupees. Then its second entry we recorded in our new balance sheets, that is write down creditors 40,000 minus not to be paid 10,000. So our paid creditors is 30,000 rupees. It is write down in outer column. Now adjustment number 5, it means कि terms number 5, value of building is to be increased by 50% and value of furniture is to be increased by 20%. It means यहाँ पे furniture और building दोनों की value increase हुई है. It means it is our profit. Okay, first we find out how many building the value increase. Okay, how much rupees? So here book value of building is 90,000 rupees and increase 15%. It means के 90,000 के 50% आते हैं 13,500 rupees. It is add in 90,000 rupees. So our total यानी कि our building at that time when the admission of Poini, okay, total 1,03,500 rupees. Then furniture's value we find out there. So furniture's books value is 70,500 plus increase 20% and this 20% count on 70,500 rupees. So 70,500 multiplied by 20%. So it's our answer is 3,500. It is increased. Okay, increased value. So our total furniture value is 21,000 rupees. Okay, and this entry we recorded at the revaluation account and in our new balance sheet. Let's see its entry. First we given this entry in our balance sheets. There is write down building 90,000 rupees plus increase 13,500. So its total write down in outer column 1,03,500. Then furniture blue color में write किया है कि furniture 70,500 rupees plus increase 3,500. So its total 21,000 rupees. It is write down in outer column. And second entry given in revaluation account. Here we have both assets value is increased, so we recorded at the credit sides of revaluation account because of it is our profit. So there is write down in blue color by building account 30,500 rupees. Then after by furniture account in green color 3,500 rupees. Then adjustment number 6, it means key terms number 6. Outstanding wages of rupees 460 is not recorded in the books. So we recorded it is okay, and when we write down this entry, it means that it is our liabilities, and liabilities here increase because of it is not recorded. Okay, so when our liabilities increase, that time in revaluations account this entry which side right? Yes, debit sides because of it is our loss. So in revaluations accounts, first entry given there in blue color to outstanding basics account 460 rupees, and second entry given in new balance sheet. Now in new balance sheets liability sides we recorded this outstanding basis 460 rupees. Why we recorded at the liability side? Because of it is our liabilities. Okay, because of outstanding हमने जो अभी भी पे किए
नहीं है. So it is our liabilities, and we know that liabilities always be recorded at the liability sides of balance sheets. Okay. Now our all adjustments is finished. Then we close the revaluation account, one by one account closing. So first we close the revaluation account. Okay. So here we doing first debit sides and credit sides amount column का हम addition करेंगे. Here credit sides is more than the debit side, so we have to profit. Okay, and this profit we distributed between these two partners in their profit loss sharing ratio. So here in green कलर में राइट हमने पहले ब्लू कलर में एडिशन राइट किया है दोनों साइड्स पे 42,000. देन ग्रीन कलर में जो हमारा प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किए करके हमने उसकी एंट्री दिखाई है कि टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट 1:3 इट इज देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. देन प्रेरणा के हिस्से में आता है 9,500 और पीयूष के हिस्से में आता है 28,500 रुपीज. और ये 38,000 का हमने ये 1/4 और 3/4 डिस्ट्रीब्यूट किया है. ओके. Then this profit we transfer in our partners capital account. So first we recorded in partners capital accounts credit sides profit. There is write down in green color by revaluation account. प्रेरणा की कॉलम में राइट करेंगे 9,500 और पीएस की कॉलम में राइट करेंगे 28,500 रुपीज. Then after we close this account because of our almost entry is finished related to partners capital account. So first we close the Piyush amount column. Okay, Piyush की amount column में credit sides is more than the debit side. So credit and debit both sides we write down the credit balance 2,19,000. 2,19,000. Okay. Then it's different write down 2,08,200 rupees. Okay. Then प्रेरणा की कॉलम हम क्लोज करेंगे. सो प्रेरणा ऑल्सो प्रेरणा's बैलेंस ऑल्सो क्रेडिट साइड्स इज मोर देन द डेबिट साइड. सो क्रेडिट साइड्स की जो बैलेंस है वो हम दोनों साइड्स पे राइट करेंगे 73,000. ओके. और डिफरेंस जो हमने पीयूष का डिफरेंस राइट किया है उसके बराबर सामने लिखेंगे 69,400 रुपीज. और उसके सामने इन फ्रंट ऑफ दिस बोथ वी राइट डाउन देयर टू बैलेंस CF मीन्स कैरी फॉरवर्ड. हम आगे ले जाते हैं. और ये बैलेंस हम कहाँ ले जाते हैं? यस, न्यू बैलेंस शीट्स में. ओके. And in our new balance sheet there is write down capital account at the liability side. Okay, there is write down Prerna. We write down already these two names Prerna and Piyush. In front of Prerna there is write down 69,400 rupees. Then Piyush balance capital balance is 2,08,200 rupees. And then after these three partners total capital is 3,40,100 rupees. यानी कि 69,400 plus 2,08,200 plus 62,500 रुपीज. और उसका टोटल हमने आउटर कॉलम में राइट कर दिया है 3,40,100. Then close the cash bank account. There is write down first amounts column addition. Here debit sides is more than the credit side. Okay, and debit sides balance is 94,750 rupees. It is write down both sides. Then difference comes at the credit sides of cash bank account. There is write down by balance CF 80,350 rupees and it is transferred in our new balance sheet. Now we close the balance sheet, but before the close balance sheet first we recorded their cash bank balance. Okay, so at the asset sides we write down the last cash bank balance
80,350 rupees. Then close this new balance sheet, and its both sides amount is equal 3,72,060 rupees. Okay, here our this example number 11 is finished. Thank you.